Hello students, welcome to my channel. Today I am here to teach you class 3 cbse's second chapter of EVS the plant fairy. तो आज हम द प्लांट फेरी CBSE क्लास 3 सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द प्लांट फेरी. पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए थे पूनम्स डे आउट के, और पूनम्स डे आउट का चैप्टर भी पढ़ा था. तो हम आज द प्लांट फेरी के साथ कंटिन्यू करते हैं जो आपका सेकेंड चैप्टर है आपके EVS बुक में. So today we will continue with the second chapter of your EVS book, that is the plant fairy. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, chupan chupai and अंताक्षरी. तो हम पिछले संडे गार्डन गए थे जो हमारी पास में ही है, और हमने वहाँ हाइड एंड सीक खेला था. हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी भी खेली थी. सो previous Sunday, that is last Sunday, we went to a garden which is in our neighborhood and we played hide and seek there. Hide and seek, that is chupan chupai, and also antakshari. Antakshari is a game of songs where so we played this in the garden. We had a lot of fun. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. After some time, Didi said, "Let us play a new game today." We had played this game in the camp last year. ओके ना, हम वो मेरी दीदी है वो जो बोलती है कि हम आज कुछ नया गेम खेलते हैं. सो व्हाट इज़ दैट न्यू गेम? सो दिस न्यू गेम वाज प्लेड इन द लास्ट ईयर्स कैंप. वो लास्ट ईयर के कैंप में एक नया गेम खेली थी, तो वो हमें आज खेलने के लिए बता रही है. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of a something and you all will have to touch it. The game began. So यहाँ पे ये जो गेम है वहाँ दीदी कुछ ये प्लांट फेरी बनती है जो कुछ नाम लेती है, जो चीज़ें अपनी सराउंडिंग में है उसका नाम लेती है और हमें जाके उसे टच करना है. यू हैव टू गो एंड touch those things what the plant fairy calls out. So the game began. The game शुरू होती है. Didi said the plant fairy asks you to touch a plant. At once all the children ran towards the plants. So ये plant fairy जो है वो बोलती है, she call out the name plant. So सारे बच्चे plant की ओर दौड़ते हैं और उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, plant पकड़ने के लिए दौड़ते हैं. Amu held the marigold plant. Shabnam sat touching a jasmine plant. Dayaram caught hold on a neem tree and stood there. Michael touched a mehendi bush. So there were 4 children. So Didi, you can see in the picture. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं दीदी बैठती है और वही जो प्लांट फेरी है और बोलती है प्लांट. तो आमू एक पहली लड़की है जो दौड़ती है और मैरीगोल्ड प्लांट पकड़ लेती है. शबनम जाके जैस्मिन प्लांट पकड़ती है. दयाराम जाके नीम ट्री पकड़ता है और माइकल जाके मेहंदी बुशेस को टच करता है. सो आमू गोज एंड टच मैरीगोल्ड प्लांट. शबनम will touch jasmine plant. Dayaram will touch the neem tree and Michael touches the mehendi bushes. So let us see what happens next. Didi said, "Very good. Everyone has touched a plant, but have you noticed that all the plants are different from each other?" So Didi here tells you have touched all different plants. So have you seen they are different from each other? They don't look like same. यहाँ पे सारे बच्चे डिफरेंट प्लांट्स पकड़ते हैं और दीदी बोलती है कि ये सारे प्लांट्स अपने में ही कुछ डिफरेंस रखते हैं. क्या तुम उन्हें नोटिस किए हो या देखे हो? दीदी you are also sitting on little plants, said Shabnam. So शबनम यहाँ दीदी को बोलती है हम यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स पे बैठ भी रहे हैं. कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? द गेम स्टार्टेड अगेन. द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ
thin trunk. So Didi again started the game as she was a plant fairy. She told to touch a plant which has a thick or a thin trunk. So यहाँ पे जो फेरी द प्लांट फेरी है वो बोलती है कि जाके कोई प्लांट पकड़ ले जिसका ट्रंक बहुत मोटा हो या बहुत थिन हो. So यहाँ पे you can see in the picture the children holding a big trunk and a small trunk. So the children ran again to touch the trees with thick or a thin trunk. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one showed in the picture? Michael found the game very interesting. He thought how lucky the fairy was. She could order everyone around. So here माइकल जो है उसको लगता है ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है और द प्लांट फेरी है जो वो इतनी लकी है बैठे बैठे सबको ऑर्डर कर सकती है. सो एंड नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल बोलता है कि अब वो प्लांट फेरी बनना चाहता है. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. अ बॉय फेरी. They were not ready to take orders from the new plant fairy. Michael said, "Get me some leaves quickly." So सारे बच्चे हंसते हैं और बोलते हैं अ बॉय फेरी ये कैसे पॉसिबल है और उसके ऑर्डर्स मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं. और माइकल एक ऑर्डर देता है कि गेट मी सम लीव्स क्विकली, थोड़े पत्ते लेके आओ. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द plant, said Didi. The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. So here Michael orders to get some leaves quickly, but Didi gave a warning that you should not pluck the leaves from the trees, but instead you have to collect the leaves which are fallen on the ground. So again we have a picture here. Do all the leaves have similar colors, shapes and margins? So you can see different type of leaves here which have different colors and different shapes. So all the leaves doesn't have same color, shape and margins. So सारे पत्ते एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़े different colors के होते हैं, different shapes के होते हैं और different margins के भी होते हैं. Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are round, some are long, and some are triangular. So Dayaram is telling that he didn't knew that there were so many different types of leaves around. Some are round, some are long, and some are triangular. He is telling. Dayaram बोलता है यहाँ पे कितने सारे different types के पत्ते हैं ये मुझे पता ही नहीं था. थोड़े राउंड है, थोड़े लॉन्ग है और थोड़े triangular है. Amo said they are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark green. Some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. Look, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some have uneven. Some of these margins even look like a saw, said Shabnam. अब वो बोलती है कि यहाँ पे पत्तों में भी कितने डिफरेंट कलर्स है. थोड़े लाइट ग्रीन है, थोड़े डार्क ग्रीन है और थोड़े पर्पल है, थोड़े रेड है और थोड़े येलो है और थोड़े लीव्स है जो ग्रीन है और उसमें पैचेस है. So some leaves are green in color, light green, yellow, red and purple, and even some have patches on the green leaves. And even here Shabnam tells that they also have different margins. So what kind of margins they are having? They have straight margins, they have uneven margins, and some look like a saw. यहाँ शबनम बोलती है कि इसके मार्जिन्स भी कितने डिफरेंट है. हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन्स थोड़े से जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रेट है, थोड़े जो है उथल पुथल है और थोड़े जो है सौ जैसे लगते हैं. Yes. Ammu and Shabnam shouted together, we also want to be the plant fairy. यहाँ पे माइकल प्लांट फेरी बन गया था और वो ऑर्डर कर रहा था लीव्स लेके आए. तो बच्चों ने देखे कितने सारे लीव्स है, डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट मार्जिन्स है और डिफरेंट शेप्स है लीव्स के.
तो यहाँ पे अब ये गेम अमू और शबनम को भी इंटरेस्टिंग लगता है और वो बोलते हैं कि उन्हें भी प्लांट फेरी बनना है. दीदी said, not today, maybe next Sunday. It is time to go home now. On the way back, दीदी recited a poem for everyone. तो यहाँ पे दीदी बोलती है कि अमू और शबनम को अभी तो टाइम हो गया है, हम नेक्स्ट संडे ये गेम कंटिन्यू करते हैं जब तुम प्लांट फेरी बन जाना. सो यू कैन बी प्लांट फेरी नेक्स्ट संडे, बट टुडे इट्स टाइम टू go back to home. So when they were going back to home, Didi recited a poem for them. So her sister recited a poem for them. So let us see what the poem was. Leaves, red, purple, and even yellow. Some green, wet, and loose. Leaves are of different kinds and of different shapes. Some are like the elephant ears, and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded, and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns, and some even resemble cranes. Whoosh, whoosh, scuttle and flutter, in the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kind and of different shapes and hues. So this poem, okay, this is a poem written about leaves. Yes, so we will study about this poem in the next video, but in today's video we have studied about the plant fairy game, in which we saw that there are different type of plant. Some might have huge trunk, some might have thin trunk, and the shapes of the leaves are of different types. They are of different colors and different margins. So plants are of different. So we can conclude today's video by telling that plants are of different type with a thick trunk and a thin trunk, and the leaves are also of different type. They are of different color, different shape, and different margin. So here is a poem. So that poem I will explain it in the next video. So thank you for today.